अस्सलाम वालेकुम वेलकम स्टूडेंट्स टू द फाइनल लेक्चर स्क्रैच के हमारे कोर्स का। इसके बाद भी डिफरेंट लेक्चर्स होंगे, लेकिन वो लेक्चर्स जो होंगे वो लाइक प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल्स होंगे। लेकिन जो हमारा फीचर से रिलेटेड लेक्चर है, दिस इज़ द लास्ट वन। और दो फीचर्स अभी हमारे मेन रहते हैं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग है और दूसरा क्लोनिंग है। और वो दोनों हम सीख लेंगे तो दिस विल बी द एंड ऑफ द स्क्रैच प्रोग्रामिंग लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर तक अभी तक आपने जितनी चीज़ें लेक्चर्स में मैंने पढ़ाई हैं, जितने भी फीचर्स पढ़ाए हैं, अगर आपको सही तरह समझ आ गए हैं और आज का लेक्चर भी आपको सही तरह समझ आ जाता है तो यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट स्क्रैच, जो भी मतलब सीखने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद ऑल कम्स डाउन टू योर क्रिएटिविटी और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और हाउ डू यू यूज़ योर स्किल्स टू क्रिएट डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट गेम्स और वट एवर प्रोजेक्ट्स यू वांट। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले। तो लेट्स फाइंड आवर गुड ओल्ड कैट। लेट्स प्लेस आवर कैट हेयर। और you might remember one of our previous lectures में we used cat and dinosaur together. और what we did was, let's rotate this dinosaur minus 90 degrees. We what we did was we made them greet each other. Like for cat we said when the flag is clicked it should say hello dino, and for dino it should wait for 2 seconds क्योंकि पहले 2 seconds के लिए cat बोल रही है। तो it should, like whenever the green flag is clicked it should wait 2 seconds, and then it should like say hey kitty. So let's run this. It says hello dino, and whenever it stops saying that, the dino says hey kitty. Okay, so it was pretty simple. लेकिन let's say कि we want to change something. We want कि it should say hello dino for like 3 seconds now. Or now when we click the flag, you have to see quickly, it says hello dino, and it is saying hello dino, लेकिन दरमियान में it's the dino starts speaking. So now we have to change the dino again. We have to change the dino so that it waits for 3 seconds now. तो नाउ यू कैन सी कि हमें कोड में एक जगह चेंज करने के लिए बाकी दूसरी जगह भी चेंज करना पड़ रहा है कोड अपना। तो दिस इज़ ओके जब तक हमारा कोड जो बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, इसके अंदर हमारा कोड जो है वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन मोर कॉम्प्लेक्स सिनारियोज, जिधर हमारी जो डिफरेंट लाइक टेंस ऑफ डिफरेंट स्प्राइट्स हैं, मल्टीपल डिफरेंट स्प्राइट्स जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, तो एक में अगर हम ड्यूरेशन चेंज करेंगे तो हमें बाकी सब में ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि इट इज़ द सेम एज जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल कैट ने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया, तो कैट जाके स्पीकर में ऐलान करे कि मैंने ये एक्शन कंप्लीट कर लिया, एंड एवरीवन कैन हेयर हर। मतलब कि वो जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट होके सबके पास पहुंच जाए। तो दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग। क्या जो भी अगर आपका स्प्राइट है वो अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो दैट मैसेज गोज़ टू एवरीवन। ओके, सो हाउ कैन वी डू दैट? तो we can broadcast the message using, like, where is the broadcast? Broadcast. Yeah, here is the broadcast in the events में आखिर पे broadcast है। और what you want is कि as soon as the cat says hello dino, जब ये कहना ख़त्म कर देगी, it should broadcast it, what should it broadcast? It should broadcast a new message, or it would be greeting, मतलब it is greeting। और now what we want to do is we want to go to the dyno, or instead of saying all this, instead of using this green flag now, क्योंकि हम इसके broadcast का wait कर रहे हैं, तो we will use a different trigger, that is the broadcast trigger। when I receive
ग्रीटिंग। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रॉडकास्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो वेन एवर हमारी जो कैट है वो सेंड्स द ब्रॉडकास्ट, तो दैट ब्रॉडकास्ट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो यहाँ पे हम उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर रहे हैं, और जैसे हम उसको रिसीव कर लेंगे दैट मीन्स कि कैट ने ग्रीटिंग्स बोल दी हैं। नाउ वी कैन से आर ग्रीटिंग्स। तो नाउ वी कैन से हेलो किटी फॉर 2 seconds, और नाउ लेट्स प्ले दिस। इट सेज हेलो डाइनो फॉर 3 seconds, और जैसे वो ख़त्म होता है तो इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, और फिर डाइनो स्टार्ट स्पीकिंग। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, लेट्स से वी मेक इट 5 seconds, तो हमें कोड में कुछ और भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रॉडकास्ट यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट करेगी सिर्फ तभी डायनासोर जो है वो बोलेगा। तो नाउ वी कैन चेंज एनीथिंग इन दिस कोड। अभी हम इसको 1 सेकेंड भी कर लें तो दैट इज़ ऑल्सो वर्किंग गुड। और सो दिस इज़ द वेरी बेसिक एग्जांपल कि ब्रॉडकास्ट यूज़ करके हम डिफरेंट स्प्राइट्स को आपस में कम्युनिकेट कैसे करवा सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी another example, थोड़ी सी different example देखते हैं। let's call another of our old friends, let's call the duck. Here is the duck, or let's change the backdrop. Let's find some interesting backdrop. Let's put it in the Arctic Ocean. Oh, here it is. Okay, it is in the Arctic. Or now what we want is we want two buttons here. Let's add buttons. Okay, we'll use this button. Okay, let's remove this button. No, we don't need this. We need an arrow button instead. Here is the arrow button. Or what we want to do with this arrow button is let's make it face upwards. So this is the upward arrow, this is arrow 1, we duplicate it, and this is the arrow 2, and we want it to be faced downwards. So let's make it face downwards using 180 degree. Okay, so we have an up arrow and we have a down arrow. Or now what we want is okay, whenever this click, this button is clicked, up button is clicked or down button is clicked, तो our duck should move. लेकिन वी कांट डू दैट। हम अभी तक जितनी भी हमने चीज़ें सीखी हैं एक्सेप्ट ब्रॉडकास्ट, हम किसी भी चीज़ से ये काम नहीं कर सकते कि हम एक स्प्राइट को मूव करें और दैट शुड ट्रिगर दी अदर स्प्राइट, लेकिन हम ये कर सकते हैं यूजिंग ब्रॉडकास्ट। तो व्हाट वुड वी डू, वी वुड गो टू दिस अप एरो, लेट्स कॉल इट अप एरो, और दिस वन शुड बी कॉल्ड डाउन एरो। ओके, तो हम अप एरो में जाएंगे एंड देन विल क्रिएट अ कोड and we'll say okay, whenever this sprite is clicked it should send a broadcast message, and what would be that message? That message would be up. Oh sorry, I made a mistake. That message should be up. Okay, और similarly हम down वाले बटन पे जाएंगे, और whenever this button is clicked we should broadcast down. Okay, so whenever up is clicked the broadcast up is received, or whenever down is clicked the down broadcast is received. Or now we want to change the code of the duck. तो duck के अंदर we will listen to these broadcasts, or we will use the when I receive trigger. When I receive up, so I will just move up. How can we move up? We will change y by 10, or let's duplicate it. Or when I receive down we will change y by -10. ओके, सो एज यू कैन सी यूजिंग ब्रॉडकास्ट हमारे लिए जो कोड है वो काफ़ी सिंपल हो गया। तो व्हेन आई क्लिक दिस अप बटन यू कैन सी द duck is moving up, or when I click this down button the duck is moving down. So this is a very simple example कि हम ब्रॉडकास्ट को यूज़ करके डिफरेंट स्प्राइट्स को आपस में कम्युनिकेट कैसे करवा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द ब्रॉडकास्टिंग, और नाउ वी हैव ओनली वन कॉन्सेप्ट रिमेन्ड स्क्रैच प्रोग्रामिंग का, विच इज़ क्लोनिंग। तो लेट्स सी द क्लोनिंग। उससे पहले लेट्स चेंज द बैकड्रॉप। कम ऑन,
let's modify the backdrop to plain one. Or okay, so now what we want is uh, we want to get a star. We'll clone a star. Here is our star. Or there's the clone function. Where was the clone function? I think it was in the looks. No, it is not in the looks. Let's find the clone function. Clone. Yes, here it is. It is in the controls function. So this is the function create a clone of myself. Okay. So what does it do? Let's see. If I click on this, nothing basically happens for now. Lekin as I move these ones clones, तो you'll see कि जितनी दफ़ा मैंने उसको click किया, it has created this clone of itself. Okay, so let's delete this. Like, let's delete this and let's delete this too. Or let's delete all these clones. I'm basically clicking this delete this clone function to delete these clones. Okay, so let's find a star again, or we'll start now simply. Okay, तो आपने देख लिया create a clone of myself जो है वो एक clone create कर देता है, लेकिन there is a very important function when I start this clone, this trigger. So what does this do? So basically let's create an example here. So let's find our hedgehog. हमने last lecture में we made this hedgehog follow these stars, or we'll do the same here. Or now what we'll do is okay, whenever hedgehog gets to this star, it should create another star in the random position. ठीक है, तो first of all तो let's make it go to the point towards the star and let's move it 10 steps. Okay, so okay, it is working fine. Or what we want to do now is we want to use the green flag clicked, or we want a forever loop ताकि ये चलता रहे, and we want to put it in here. And now what we want to do is we want to go to the star and we want to say कि whenever this sprite is clicked, okay, not whenever the sprite is clicked, we want to say कि whenever green flag is clicked, so we want an infinite loop, or we'll find this infinite loop here. और what we want to do is we want to check कि हमारा जो hedgehog है वो स्टार को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा. ठीक है, तो what we can do here is we can see the touching hedgehog, or we can get the if block here and we can check if it is touching the hedgehog. If it is touching the hedgehog, it should create a clone of itself. Okay, or when it creates the clone of itself, what should the clone do? The clone should move to a random position. The clone moves to a random position. Okay, तो now let's see what it does. तो जब हम green flag को click करेंगे, तो let's put the hedgehog here and put the here. Okay, whenever we click the green flag, so as you can see what has happened here is okay, whenever it touches this star, तो it creates a clone, random clone किसी भी जगह पे. Let's delete this hedgehog, let's make it a bit simpler. So what I want to do now is if let's remove this condition. So I want के if the mouse pointer is touching it, मतलब कि अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो it should create a clone of it should create a clone of itself. So let's see, whenever I
go close to it, it starts creating a lot of clones of itself, and it places all these clones in a random position. So as you can see, now the clones are really starting to mess up the whole screen. तो वी कैन डू इंटरेस्टिंग स्टफ विद दिस क्लोनिंग, जो भी हमारे हमारे पास फीचर है क्लोनिंग का। और विल यूज़ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे वी विल क्रिएट अ गेम, योर फर्स्ट गेम, जो कि असल में एक गेम होगी, और दैट विल बी कैचिंग स्टार्स गेम, जिसमें लाइक द कैट विल बी कैचिंग सम स्टार्स, और इट विल बी अ गुड गेम। और उसमें हम देखेंगे हाउ कैन वी यूज़ दिस क्लोनिंग, जो फीचर है हमारा, उसको यूज़ करके हम कैसे स्टार्स को क्लोन करके उनको गेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन यूज़ वेरिएबल्स टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम, एंड हाउ वी कैन यूज़ कंडीशंस और लूप्स। तो अभी तक हमने जितने भी अपने लाइक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद से जितने भी हमारे स्प्राइट्स और बैकड्रॉप्स एंड स्टेज और कोड ब्लॉक्स, फंक्शंस, कंडीशनल्स, लूप्स, वेरिएबल्स, और अभी रिसेंटली हमने जो ब्रॉडकास्टिंग और उसके बाद फाइनली क्लोनिंग पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके वी विल क्रिएट अ वेरी गुड गेम इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आप अगले वीक से वीक 4 से ऑनवर्ड, तो आप अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप जो हैं लाइक गेम्स एंड स्टफ, आपको डिफरेंट बता दिए जाएंगे, डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए जाएंगे अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट है या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है। और उस हिसाब से आप ये जितने भी आपके लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल द फीचर्स लेक्चर्स हमारे स्क्रैच प्रोग्रामिंग का, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। गुड लक विद एवरीथिंग। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेक श्योर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई इट विद योर ओन हैंड्स, जो मैं अपने लेक्चर्स में आपको मैं जितने भी एग्जांपल्स करके बता रहा हूँ, तो यू शुड डू इट विद योर ओन हैंड्स। खुद से आप बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके आप खुद से कोड लिखें, उसको रन करें, फिर उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करें, हल्की सी चेंज करके देखें कि उससे क्या होता है। और अगर आपका कोड काम नहीं कर रहा तो फर्स्ट ट्राई कि आप खुद से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पूरी ट्राई करें कि आप खुद से उसको रिजॉल्व कर लें। अगर खुद से नहीं हो रहा रिजॉल्व तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, या फिर यू कैन आस्क सम फ्रेंड फॉर हेल्प। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रही तो यू कैन कॉन्टैक्ट द सीआर, और सीआर से भी अगर प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही तो शी कैन कॉन्टैक्ट मी। और लेकिन जो मैं रेकमेंड करूँगा, बेस्ट अप्रोच यही है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें। एक दफ़ा नहीं होती, दूसरी दफ़ा ट्राई करें। और आप जितना ज़्यादा खुद से मेहनत करेंगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो उतनी ज़्यादा बनती जाएंगी। और एट द एंड जस्ट मेक श्योर कि आप प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं, एंड यू आर कोडिंग विद योर ओन हैंड्स। सो बेस्ट ऑफ लक विद द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स।